डिजिटल प्लेटफॉर्म की उदय के बीच प्रिंट मीडिया सूचना का एक भरोसेमंद स्रोत बना हुआ है। ये बात मंगलवार को यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय में एक सत्र के दौरान हिंदू ग्रुप की उप अध्यक्ष श्रीधर अरनाला ने कही। भविष्य की गतिशील पेशेवरों के निर्माण में मीडिया की भूमिका पर छात्रों को संबोधित करते हुए अरनाला ने गहन विश्लेषण और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने की इसकी क्षमता का हवाला देते हुए प्रिंट मीडिया की स्थायी महत्व पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला और जोर दिया कि वैज्ञानिक अध्ययन बेहतर समझ, सीखने और ब्रांड रिकॉल के लिए प्रिंट का पक्ष लेते हैं। अरनाला ने छात्रों के लिए समाचार पत्रों के लाभ को भी रेखांकित किया, जिसमें पढ़ने और लिखने की कौशल को बढ़ाना, सामान्य ज्ञान का विस्तार करना और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने छात्रों को अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने, कड़ी मेहनत करने और मनोरंजन से अधिक शिक्षा को प्राथमिकता देने की सलाह दी। यूएसटीएम की प्रशिक्षण और प्लेसमेंट डिवीजन द्वारा आयोजित सत्र में छात्रों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिन्होंने अंतर्दृष्टि और सलाह लेने के लिए अरनाला के साथ एक गतिशील बातचीत की। इस कार्यक्रम में द हिंदू ग्रुप के अधिकारी और यूएसटीएम के संकाय सदस्य भी शामिल हुए। अरनाला की यूएसटीएम यात्रा का मकसद छात्रों को उनकी कैरियर विकास और बौद्धिक विकास के लिए मीडिया का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना था। डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया के महत्व पर उनकी जोर ने छात्रों को प्रभावित किया, जिन्होंने एक ऐसी दुनिया में भरोसेमंद स्रोत के मूल्य को स्वीकार किया जहां फर्जी खबरें प्रचलित है। When you are able to communicate with your patients. Now, if you are a good doctor, but you don't know how to talk to your patient, will it work? Because your patient is not understanding what you're talking. So therefore, communication and language becomes very, very important. I'll tell you why, how you can improve, etc. These are our brands, right? We have Hindu, we have Business Line, we have Tamil, we have Hindu on Sunday, we have Weekender, we have schools. There are products that we curate specifically for students. The reason why one does it, not that it's going to do any project out of it, but if your teacher tomorrow tells you, please tell me how many electric poles are there from here to your house to the college, then you will start counting, correct? You know the difference? When somebody tells you if you do it, that's execution. You have to have the passion of what you want to do. Now, I will tell you how a newspaper is made. Focus kariye is pe. You would have never imagined that there are so many things that happen before a newspaper that comes into your hand so easily, right? So the first is reporting. What is reporting? Reporting is whatever I am seeing, I will report. For example, Sridhar is here in USTM today, is the report. Never allow somebody else to take charge of yourself. Exactly on the 14th day evening, we'll remember, okay, 5 of you will get together and go to the man, ma'am, it's become very difficult, you know, you gave us all these projects, extended by 2 days, correct? So what is that? That is sales, no? Now, the moment you think sales is beyond all of this, then you can never do it. Don't treat that as an alien thing, it's an embedded part of all of ourselves. How do you think media personalities like us, like career experience, how they influence us? Like for example, if I am an UPSC aspirant, how do you think the media person is going to influence us? Integrate the Great digital question. and digital media. It's a great question. I think what we have done over the last 7 years, company to have crossed 2.5 lakh subscriptions on digital. No other media company has done. In the Northeast, where the paper is not coming on time, we could do both print and digital. So we could get a digital subscription of the daybreak. How do you see or look into the issue of misinformation of fake news which used to affect the media credibility? The reason why something exists for so long is because of its trust and credibility. As long as you pick up your values and stay there, people will come back to you. So for us, people come back to Hindu to refer to anything important for them. How do media personality influence career experience and professional behavior? Important for modern professionals. It will help you in understanding the culture of an organization that either you're going to set up or you want to join. I would like to thank our active students. Thank you students for your active participation and for your engagement. Your involvement is what makes our... मैं मन्ना संगमा आपकी अपनी लठवा न्यूज से ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।